हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिवीजन हिंदी में। सो जैसे मैंने आपको कल बताया था, हम आज क्या करेंगे। हम एक सेक्शन सी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 20 मार्क्स का है, जिसमें है ग्राफ। ओके। सो मैंने नॉर्मली स्टूडेंट्स को देखा है कि 2020 से पहले ग्राफ आते थे क्वेश्चंस में, एंड स्टूडेंट्स को कभी प्लॉटिंग भी करना पड़ता था ग्राफ का एग्जाम्स में। लेकिन अगर 2020 के बाद अगर बच्चे, स्टूडेंट्स, आप लोग व्यूअर्स, अगर आप ग्राफ देख लो ना, तो आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट। सो मुझे आज एक क्वेश्चन करना है जो ग्राफ, जिसमें ग्राफ इंक्लूडेड है, और मैं आपको बताऊंगी कि ग्राफ आपके लिए क्यों एक टैबू नहीं है, राइट। वाई यू शुड नॉट बी स्केर्ड, वाई यू शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल बाय सीइंग द ग्राफ, राइट। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू डू इज, मैं आपके साथ एक वेरिएंस का क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था वो आज हम करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे सेक्शन सी वाले 20 मार्क्स के। एंड ये दोनों ही थोड़े से मैंने जो क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, मतलब ये रिवीजन के लिए, वो मैंने वैसे सिलेक्ट किए जहां मुझे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है, और स्टूडेंट्स ने बताया है कि थोड़े से थोड़े से एरियाज जो उनको डिफिकल्ट लगते हैं, या फिर जहाँ पे उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लगता है, वैसे वाले ही अगर आप नोटिस करो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। बट एज आई से, मैं कितने भी क्वेश्चंस आपके साथ कर लूं, अगर आप स्टडी हब में से या फिर पास्ट क्वेश्चंस को एक बार देख जाओगे एंड उसमें से 60% अगर सॉल्व करोगे, तभी जाके आप वो जो एक सुकून, एक एक कंफर्टेबल, एक कॉन्फिडेंस वाले एनवायरनमेंट में तभी ही जाओगे। आज थर्ड डे है रिवीजन का, और मैंने आपको 2 दिन पहले से ही कहा है और स्ट्रैटेजी दी हुई है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। आई रियली होप आप वैसे ही कर रहे होंगे। पहले ग्राफ वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो है अल्का होटल, 2018 में पूछा गया था। एंड उसके बाद एक वेरिएंस का क्वेश्चन ले लेते हैं, जो है कपा कंपनी, वो भी 2018 में पूछा गया था, राइट। ये दोनों ही सेक्शन सी के क्वेश्चंस है, एंड दोनों ही 20 मार्क्स अराउंड के क्वेश्चंस हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं एक ग्राफ के क्वेश्चन से। Alka Company is situated in a major city close to many theaters and restaurants. The Alka Hotel has got 25 double bedrooms and it charges 180 per room per night, regardless of single or double occupancy. So, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे हमको, कि एक होटल इंडस्ट्री है जहाँ पे हम देखने वाले हैं, और यहाँ पे एक होटल है अल्का होटल जिनके पास 25 रूम्स है। उनका प्राइस जो, जिस प्राइस पे वो रूम्स बेचते हैं, वो है $180 पर रूम पर नाइट। अगर वो सिंगल ऑक्यूपाइड है या डबल डबल ऑक्यूपाइड है, दैट इज नथिंग दैट वी आर कंसर्न अबाउट। उसका वेरिएबल कॉस्ट है $60 पर नाइट पर रूम। द होटल इज ओपन फॉर 365 days a year with a 70% budgeted occupancy rate. Fixed costs are budgeted at 600,000 a year and accrue evenly throughout the year. So, और क्या पता चल रहा है। होटल है तो आपने नॉर्मली होटल इंडस्ट्री देखा होगा, वो 1-2 दिन के लिए बंद नहीं होती है, वो 365 days ही ओपन रहती है। इनका ऑक्यूपेंसी है 70%, मतलब एट एन एवरेज, अगर हम 25 रूम्स को समझे, इफ 25 रूम्स इज लाइक 100%, तो एट एन एवरेज उनके 70% ऑफ द रूम्स हमेशा ही ऑक्यूपाइड रहते हैं। ये एवरेज निकाला है, पर डे का पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है। फिक्स कॉस्ट है जो पूरे साल का है, वो है 600,000, एंड ये थ्रू आउट द ईयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में नोटिस कीजिए, ये क्वार्टर वाइज डिवाइड किया है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, द रूम ऑक्यूपेंसी रेट्स आर significantly below the levels expected compared to other times or other quarters of the year. सो जो पहला क्वार्टर है कंपनी का, उसका जो रूम ऑक्यूपेंसी है वो कम हो रहता है compared to the other 3 quarters. But obviously, that value has been inculcated in your 70% of your budgeted occupancy.
Alka Hotel is expecting to sell 900 occupied rooms during the nights in quarter one, and options are there to improve profitability are being considered, including closing the hotel for the duration of quarter one or adopting one of the two possible projects as follows. So ये पैराग्राफ में काफी इन्फो है जिससे हम जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, अच्छे से प्रैक्टिस करके अगर एग्जाम में जाते हैं तो ऐसी चीजें हमको थोड़ा कंफर्ट देती है कि हाँ मालूम है क्या होगा यहाँ पे, या फिर इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसका थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, जैसे कि 25 रूम्स है, 180 प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है $60, फुल ईयर का ऑक्यूपेंसी 365 डेज के हिसाब से 70% का है, और फिक्स कॉस्ट जो पूरे इक्वली स्प्रेड होते हैं एवरी मंथ में इज $600,000। उनका क्वार्टर वन, कंपनी का जो क्वार्टर वन है वो इतना अच्छा नहीं जाता है, एंड ऑक्यूपेंसी इज अबाउट 900 रूम्स। आप पूछोगे 900 रूम्स कैसे आया, तो बेसिकली ये लोग जो क्वार्टर पकड़ते हैं, सपोज सी वन क्वार्टर इज लाइक 3 months, राइट? सो वो 3 months इंडिविजुअल से अबाउट इट इज 30 डेज का मंथ अगर पकड़ ले, रैंडम है, सो 30 डेज इंटू 3 months 90 हो जाता है, एंड फिर उसको आप 25 से मल्टीप्लाई करो बिकॉज उतनी बेडरूम्स है इनके पास, उसके हिसाब से वो लोग रूम निकाल रहे हैं। ऑक्यूपाइड रूम फॉर द होल क्वार्टर इज 900, विच अपेरेंटली अल्का होटल इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद। उनको लगता है कि ये उनका एक स्लैक सीजन है, क्वार्टर वन इज अ स्लैक सीजन, and they have got certain options to deal with it because obviously उनको loss में नहीं जाना है। So the first option is to close the hotel for a quarter, right? अब होटल है तो आप उसको एक क्वार्टर के लिए तो बंद नहीं कर सकते हो, राइट? नॉर्मली क्या होता है, अगर होटल एक क्वार्टर के लिए बंद हो जाती है, देन द प्रॉब्लम इज दैट कस्टमर्स या क्लाइंट्स है वो अज्यूम करेंगे कि वो शायद होटल बंद है, ऑपरेशनल ही नहीं है, राइट? क्योंकि ये होटल इंडस्ट्री में बहुत रेयरली होगा कि होटल सीजनली चालू या बंद होती है, right? So that is something which they are considering. Apart from that, they have got two other projects also. So let's see what projects they have. The first one is a theater package. For quarter one only, the Alka Hotel Management would offer guests a theater package. Couples who pay for 2 consecutive nights at a special rate of $67.50 per room per night will also receive a pair of theater tickets for a payment of $100. The theater tickets are very good value and are a result of a long negotiation between the Alka Hotel Management and the local theaters. The theater ticket cost Alka Hotel $95 a pair, and the total the Alka Hotel's fixed cost specific to this project are budgeted at $20,000, right? So एक ऑप्शन तो कंपनी के पास है जो ऑब्वियसली हमको होटल इंडस्ट्री में बराबर नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है, जो है एक क्वार्टर के लिए कंपनी को या होटल को टेम्पररीली क्लोज कर दो, राइट? दूसरे दो ऑप्शंस या पैकेजेस क्या है कंपनी के पास, एक है थिएटर पैकेज जहाँ पे अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिवली दो नाइट्स के लिए रूम बुक करे, देन पर नाइट रूम कॉस्ट वुड बी 67.5। नॉर्मली अल्का होटल कितने प्राइस पे रूम बेच रहा है, $180 पे, राइट? लेकिन यहाँ पे बेचेगा $67.50 पे। उसके साथ दो टिकट्स, थिएटर टिकट्स, दे वुड बी सेलिंग ऑल्सो एट अ प्राइस ऑफ $100 जो उनको मिलेगी $95 में। लेकिन ये सारा ही जो यू नो the hotel's fixed cost specific to this project are budgeted to be $20,000, right? The hotel's management believes that the theater package will have no effect on their usual quarter one customers who all are business travelers and who have no interest in the theater tickets but will still require their usual rooms. So होटल मैनेजमेंट ऑब्वियसली फील्स के जो क्वार्टर वन के कस्टमर्स है, जो 900 रूम्स इनकी ऑक्यूपाई होती है क्वार्टर वन में, वो मोस्टली बिजनेस ट्रैवलर्स है, उनको शायद टिकट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट? एंड दे वुड स्टिल टेक देयर यूजुअल रूम्स। सो somewhere this amount of 20,000 which is spent on marketing and administration might not be something that is worth
doing. That's what the hotel management feels. The second one is the project 2, which is opening up a restaurant. दिस इज वेयर आई सेड स्टूडेंट्स जब ग्राफ देखते हैं, मतलब मैंने तो काफी स्टूडेंट्स से सुना है, एज यू नो, काफी टाइम से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और सारे ही एसीसी के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं हम लोग। मैं स्पेसिफिकली 10 साल से 10 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जब उनका उनका डिस्कम्फर्ट वाला कुछ भी देख लेते हैं ना, तो वहीं पे थोड़ा सा वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन अगर आप एक बार एब्जॉर्ब कर लो कि हाँ ठीक है ग्राफ आएगा और हम हैंडल कर लेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील, तो वो वहीं पे आप थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाते हैं, स्पेशली एग्जाम के प्रेशर में, राइट। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 इज रेस्टोरेंट। कंपनी सोच रही है कि रेस्टोरेंट ओपन करे। देयर इज अ स्कोप टू एक्सटेंड द अल्का होटल एंड क्रिएट इनफ स्पेस टू ऑपरेट अ रेस्टोरेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स गेस्ट. The annual cost and revenue and the volume for the combined restaurant and hotel are illustrated in the graph. So ये एक बार अपन graph देख लेते हैं. Now this graph, if you see, is basically a situation after the restaurant is open. So how does it look, right? देखिए अगर आप sales देखें तो that will start from your level 0, right? And the sales goes up. There is a fixed cost. पहले हमारा fixed cost कितना था? 600,000. अभी आप देखो fixed cost कितना दिखा रहा है? 800,000, right? So यहाँ पे आपका एक fixed cost 200,000 से increase हो रहा है. This is how I'm just reading this graph, right? And obviously उसके बाद जो आपका total cost है वो जा रहा है 1560 पे. And आप total sales कर रहे हो worth 220 million, right? So इतना आपका ब्रेक इवन चार्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट दिस इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी यूज्ड इफ प्रोजेक्ट 2, which is opening a restaurant, is expected to be opened, right, or accepted. What the graph does not include the theater package. Yeah, I do understand that. Let's see what the question they are asking here. Using the current annual budget figures and ignoring the two proposed projects, calculate the break even of occupied rooms per night and the margin of safety as a percentage. अगर हमारा सिलेबस देखें ना तो ये चीजें कभी कभी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी सिंपल लग जाती है एंड दे एंड अप इग्नोरिंग द ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले फॉर्मूलाज. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हैव पिक्ड अप दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें theater becomes your brain drainer. Sorry, the graph becomes your brain drainer and something which you end up overlooking, which is your break even and margin of safeties. So चलो ये वाले formulas भी revise कर लेते हैं. एग्जाम में तो नहीं दिए होंगे, हमको ही करना है, right? Right, so पहले अपन break even निकालते हैं. First, let's put the formula of break even. Break even point is equal to fixed cost divided by contribution. What is contribution? Contribution is equal to sales price minus variable cost. क्या क्या है हमारे पास डिटेल्स? हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट जो है 600,000. हमारे पास है सेल्स प्राइस जो है $180 पर नाइट. वेरिएबल कॉस्ट जो है $60 या पर नाइट, राइट. अब पहले तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं. कंट्रीब्यूशन is 180 minus 60, which is $120 per night. And इससे हम अपना break even निकालते हैं. So your break even, I'm just going to put it up here, which is 600,000 divided by 120. आपकी एग्जाम में आपको इतना स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो मैं क्या लिख रही हूँ. ओके, सो दैट कम्स टू 5,000 रूम्स.
ये क्वेश्चन रूम्स पे बेस्ड है, तो ये रूम्स में कन्वर्ट होगा, जो वैल्यू है वो जो भी यूनिट्स में आपको ब्रेक इवन फाइंड आउट करना है, किलोग्राम्स में, लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, नंबर ऑफ यूनिट्स में, उसमें आप फाइंड आउट कीजिए। राइट, ये वाला रूम्स में है, तो दिस विल बी बेस्ड ऑन रूम्स। ठीक है, so this is how we found out your break even. Then we will revise our margin of safety formula, which is equal to budgeted minus break even, and the whole thing is then divided by budgeted. Right, यहाँ पे ब्रेक इवन हमने अभी निकाला 5000 रुपीज, बजटेड हम निकालेंगे। राइट, सो बजटेड क्या है इनका, ये बोलते हैं 365 रूम्स है, सॉरी 365 डेज है, इंटू 25 रूम्स है, इंटू 70% ऑक्यूपेंसी है। राइट, तो हमारा बजटेड कितना निकलेगा, इज इक्वल टू 365 इंटू 25 इंटू 70%। So budgeted rooms occupancy is 6387.5. अब क्या निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सो विच इज इक्वल टू 637.85 minus my 5000 divided by again 637.85. I'm going to put the whole thing in one more bracket ताकि मैं उसके आगे 100 लगा सकूं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आइडियली एक परसेंटेज वैल्यू में आ जाता है, उसके हिसाब से निकल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच इज 21.72%। अगर आप 100 नहीं लगाते हो तो 0.2172%, 0.2172 आएगा ऑब्वियसली, जिसको आपको 100 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में शो कर रहे हैं अपन। राइट, 4 मार्क्स, सिंपल क्वेश्चन, पॉकेट में आ गए। Ignoring two prospected projects. Again, ignoring the two prospected projects. Calculate the budgeted profit or loss for Q1 and explain whether the hotel should close for the duration or not. So, before even looking at the prospects of the theater and the prospects of the restaurant, the question is asking you कि Q1 का जो भी इनकम जनरेट हो रहा है, that is by selling those 900 rooms, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। फर्स्ट थिंग, सिंपल क्वेश्चन है ये। राइट, अब अपना कंट्रीब्यूशन निकालो, नंबर ऑफ रूम से मल्टीप्लाई करो, फिक्स कॉस्ट माइनस करो, पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, शुड द कंपनी क्लोज द होटल, मैंने पहले ही बोला क्लोज करना तो मीनिंग ही नहीं बनता है, तो वो दोनों चीजें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन है, सो आई एम जस्ट गोना गो अहेड विद दैट। सबसे पहले, क्योंकि मुझे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन का वैल्यू है जो है 120, रूम्स ऑक्यूपाइड है 900, सो 120 इंटू मैं क्या करूंगी 900 रूम्स, which comes out to be is equal to 120 into 900, 1,08,000, ऊपर एक डॉलर साइन दे देते हैं, एंड फिर आता है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो 600,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है वो थ्रू आउट द ईयर का है, तो अगर 4 क्वार्टर में आप डिवाइड कर रहे हो तो एक क्वार्टर में 3 मंथ्स आएंगे। सो इसको कैसे लेंगे हम, 600,000 डिवाइड बाई 12 months, एंड देन द होल थिंग नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3। राइट, ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो इज इक्वल टू मैं पहले ही एक नेगेटिव वाला ब्रैकेट डाल देती हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू डू 600,000 divide by 12 multiplied by 3, 1,50,000. Clearly this looks like a loss, and the loss is of 42,000, which is a loss. अब इसको loss तो है, right, this is a clear loss. What is your take?
should the company shut down for 3 months or not? The points to that is, if hotel shuts or not, the fixed cost will remain. If hotel shuts, there is a lost contribution. Lastly, the temporarily closed hotel will have a bad reputation on the customers, and hence Alka Hotel should continue and not close in Q1. पॉइंटर्स लिखे हैं, आपको उसको पैराग्राफ फॉर्म में डालना है। बहुत ही सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली इसलिए उठाया है क्योंकि कभी हम लॉस्ट हो जाते हैं डिफिकल्ट वाले पॉइंटर्स को लेके, डिफिकल्ट वाली थिंग्स को लेके, और ऐसी बेसिक चीजें जो 20 मार्क्स इजीली आपको दे सके, जैसे ब्रेक इवन हो गया या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द सिलेबस में हमने किया है, और समथिंग विच इज एमए में भी था, वो सब हम ओवरलुक कर जाते हैं, राइट। सो जो कभी इजी मार्क्स होते हैं ना, वो हम मिस कर जाते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ देख के ही हम दुखी हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो द होल पॉइंट ऑफ शोइंग यू दिस क्वेश्चन इज दैट ग्राफ से डरना नहीं है, ग्राफ को पहले देखो क्या हो रहा है ग्राफ में। 99% ऑफ द टाइम्स आपको ग्राफ समझ में ही आ जाएगा, एंड 100% ऑफ द टाइम आपको प्लॉटिंग तो है ही नहीं, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक एट द ग्राफ, यू हैव टू इंटरप्रेट द ग्राफ, राइट, सिंपल। एंड ब्रेक इवन हमने थोड़ा सा ब्रश अप कर लिया यहाँ पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the break-even point in sales value of project 1. Explain whether the hotel should adopt the project or not. Now, जब हम प्रोजेक्ट 1 पे जाते हैं तो ये अपना थिएटर वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो लेट्स सी, थोड़े फिगर्स तो मुझे भी याद है। 67.5 per night per room, and 95 is the cost, 100 is what they are selling it for, and your contribution cost also you have got. तो पहले देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल फाइंड आउट करना है, राइट। सो पहले तो देखते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना निकल रहा है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए सीएस रेशियो, सीएस रेशियो के लिए हमको चाहिए कंट्रीब्यूशन, राइट। सो ये चीजें अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट पैराग्राफ का कंट्रीब्यूशन उठा के डाल देगा, जैसे कि पहले हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विच इज $120, अगर वही उठा के आपने डाल दिया तो वो पूरे 4 मार्क्स आर गॉन, राइट। सो मुझे नया कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है फॉर द थिएटर पैकेज, पहले मैं वो करूंगी, राइट। सी, राइट, सेल्स रेवेन्यू कितना बनेगा, 67.5 इंटू 2 नाइट्स, क्योंकि 2 नाइट्स का कंपलसरी पैकेज लेना है। 67.5 इंटू 2, राइट। एंड अपना थिएटर टिकट्स भी कंपनी बेच रही है, इसका राइट अमाउंट है 100। सो टोटल आपका सेल्स रेवेन्यू हो गया 235, राइट। उसके बाद आपकी कॉस्ट आ गई। सो पहले तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जो सिर्फ वो होटल रूम का है वो आपका $60 है, राइट। सो 2 नाइट्स का वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, 2 into 60 विच इज 120, एंड आपका थिएटर टिकट का कॉस्ट है 95। सो वो 95 यहाँ पे आ गया, राइट। एंड दिस विल गिव यू योर टोटल कॉस्ट विच इज 120 प्लस 95। दिस इज योर टोटल कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे,
it is going to be equal to 235 sales revenue minus your variable cost. You will get your $20, which is your contribution. फोक्स इसमें ध्यान देना है, पहले का ही कंट्रीब्यूशन उठा के नहीं डाल देना है, राइट? इस पे एक डॉलर साइन लगा देते हैं. अब CS रेशियो फाइंड करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. वी हैव अवर कंट्रीब्यूशन, वी हैव अवर सेल्स. यहाँ पे मैं वैल्यू अलग से डाल देती हूँ, 20 डिवाइड बाई 235, राइट? एंड अगर इसको यही चीज को अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी. सो क्या वैल्यू आएगा इसका? इज इक्वल टू 20 divided by 235 multiplied by 100. So it is 8.51%. Right? अब break even sales निकालना है, right? Break even point in sales. So break even sales निकालने के लिए your formula is your contribution, sorry, your fixed cost. जो extra fixed cost आप कैरी कर रहे हो, राइट? जो है 20,000 फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट डिवाइडेड बाय योर CS रेशियो. मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा कॉस्ट है. जस्ट लुक एट दिस. Fixed cost specific to this project is how much? 20,000, and that is what I've used here. And then the same value I've used for the CS ratio. Let's take this. Fixed cost हमारा 20,000 है, divided by 8.51%. Here I'm going to use. So your direct value will come effortlessly, which is 2,35,017. We can round it off at a break even sales revenue of dollar 2,35,000. Right? Calculate the break-even. Explain whether the hotel should adopt the project or not. राइट? अगर अपन ये देखें तो ऐसे लग रहा है कि ये ब्रेक इवन रीच करने को होटल को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द लोअर कॉस्ट दैट इट इज चार्जिंग, सॉरी द लोअर प्राइस दैट इट इज चार्जिंग ऑन द होटल. अगर नोटिस करो आप, नॉर्मली होटल 180 पे सेल कर रहा है, लेकिन वो एक क्वार्टर को 67.5 पे सेल करेगा. ऊपर से थिएटर टिकट्स भी दे रहा है जिसपे उसका मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम है, एंड जो फिक्स कैश कॉस्ट वो अट्रैक्ट कर रहा है वो काफी ज्यादा है, which is $20,000. So according to me, the break even sale is high, is difficult to achieve, and the company should not take this project on board. So let's write the same thing here also. The contribution of the theater package is very low. It leads to a very high break even sales. What else? Hotel management is also finding the theater package less attractive because the hotel management is also finding the theater because the clientele is all business clients, right? So they would not be interested. Hence, project one, theater package is not feasible. क्लियर? सारे पॉइंट्स दे दो. वैसे मैंने ज्यादा ही पॉइंट्स दिए 2 मार्क्स के लिए, लेकिन ठीक है, याद आ रहे तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पैराग्राफ में लिखना प्लीज.
मेरे जैसे पॉइंटर्स में मत लिखना, मैंने तो ऐसे ही लिखा है क्योंकि अभी तो स्किल लेवल में आ गए हो, तो आई एम श्योर पैराग्राफ फॉर्मेट तो लिखना आता ही है, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है। यूजिंग द ग्राफ, और ये भी 8 मार्क्स का। यूजिंग द ग्राफ क्वांटिफाई एंड कमेंट अपॉन दिस फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट 2 ऑन द अल्का होटल। क्वांटिफिकेशन तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया। एक तो फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन सामने सेल्स भी बढ़ रही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी शिफ्ट हो गया है, नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपेंसी भी बढ़ गया है, राइट। सो एवरीथिंग इज वर्किंग टुवर्ड्स द ग्रोथ when we talk about the opening up of a restaurant. And if we see the opening up of a restaurant, it is not just going to help the company for 1 quarter, but going to help the company for throughout. So it is going to be something where the cost is also spread throughout the year. At the same time, the profits and the growth and the sales revenue is also enjoyed throughout the year. So that is what I intend to put into my answer also, and obviously show some of the figures from here. Right? So हम क्या लिखेंगे? ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर डी। Let's put this up, right? Project 2 of opening a restaurant will increase the fixed cost by $200,000, राइट। पहले 600,000 था, अभी 800,000 हो गया। मैंने आपको ग्राफ में दिखाया है, राइट। व्हाट एल्स? द रेवेन्यू is expected to increase on per night basis also। कैसे इंक्रीज होगा? अब आप कितना कमा रहे हो? 2000 टू, हाँ, 20 million डिवाइडेड बाई 8,000, राइट। सो वो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ फटाक से कैलकुलेट कर दूंगी एकदम। 250, right? So the revenue is expected to increase per night also 20 million divided by 8,000, which is the number of rooms that it expects to sell. So the increase in per room per night rate is from $180 to $250, right? क्या करेंगे उसके बाद? The total cost has also increased to $1560123, where variable cost is 1560123 zeros minus 800,000, तो वो कितना बनता है अपना? 7,60,000, राइट। और क्या है? ब्रेक इवन भी बढ़ गया है, has increased by 161 rooms. राइट। वेयर आई हैव पिक्ड अप दिस इंफॉर्मेशन? मैंने आपको जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने दिखाया, मैं वापस एक बार आपको दिखा देती हूँ। आई होप यू कैन सी द ग्राफ नाइस एंड क्लियर एंड बिग, राइट। जस्ट राइट। सो हम अगर इधर नोटिस करें तो रेवेन्यू देखिए 200,000 तक बढ़ गया है,
Total cost 1560, fixed cost 800, margin of safety and the total revenue, total number of rooms. पहले हमारा ब्रेक इवन कितना था 5000, राइट? और टोटल नंबर ऑफ रूम्स थी 6387, राइट? अब वही चीज दोनों इंक्रीज हो गई, हमारा ब्रेक इवन थोड़ा सा पुश फॉरवर्ड हुआ है 5161 पे, एंड टोटल रूम ऑक्यूपेंसी 8000 पे चली गई. सो काफी कंपनी ने प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ द second project, which is our restaurant. So if we want to, talk about or comment about it, we can say that the decision of project 2 of opening a restaurant is more visible and profitable. The benefit of the restaurant will be throughout the year, right? तो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस आंसर. ऑब्वियसली आपको इसको पैरा में फॉर्मेट करना है, और ये जो कैलकुलेशंस मैंने किए हैं जो वैसे लगते हैं सिंपल, लेकिन अगर आप इनको मिस कर जाओ तो आप इसमें मार्क्स कम एक्सपेक्ट करना, राइट? सो दिस बेसिक कैलकुलेशंस वुड signify, would back up your answer of why you think project 2, which is opening a restaurant, is expected to be more profitable compared to either not showing up and opening a restaurant, opening your hotel at all for a quarter, or opening or offering the theater packages, right? So this is how you answer it. Here I'm going to show you the brain drainers, and I'm going to also show you your motivationals. तो जब आप पहले ये क्वेश्चन देखो अपने आप से मेरे हेल्प के बगैर, तो ये एक हो जाता है आपका कंफर्ट लेवल. ग्रीन कहाँ से ब्लू है? कंफर्ट लेवल, राइट? एंड ये जो ये जो हमारा चार्ट है, ये जो चार्ट है, द ग्राफ, दैट बिकम्स अ ब्रेन ड्रेनर, राइट? सो ये आपका ये एरिया है ना, आई कुड नॉट, unfortunately I cannot fill a color in that, but I'm just going to fill up a color just next to it. ये जो है ये हो गया आपका ब्रेन ड्रेनर. एज आई सेड, अगर हम पहले से ही ब्रेन ड्रेनर्स को एंटिसिपेट करके एक्सपेक्ट करके ही पेपर लिखे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस पेपर लिखने का थोड़ा सा हमारा सेटल डाउन हो जाता है, वो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आ जाता है, राइट? लेकिन अब अगर हम इसको ओवरलुक करते हैं, then the problem arises. That is where the company would have, sorry, the student would have a problem in terms of his or her motivation, right? So this is how you will be carrying on a question which has got a graph in it, right? इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम थोड़े से अनसंग हीरोज को भूल जाते हैं. जैसे कि हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स को हम, ब्रेक इवन के जो फॉर्मूलाज है जो वैसे तो सिंपल है, लेकिन उनको यूज करना, उनका एप्लीकेशन करना हम भूल जाते हैं. Let's go to the next question, which is kappa. Now, before I start this question, let me tell you, I hope you can see it. Right here it is. So, ये जो क्वेश्चन है कप्पा कंपनी, ये भी 2018 में पूछा गया था. एंड ये वाले क्वेश्चन का एक बेनिफिट ये है कि ये क्वेश्चन आपको वेरिएंसेस से थोड़ा सा अकोमोडेट करता है, थोड़ा सा वेरिएंस के हिसाब से आपको हेल्प करता है, राइट? बिकॉज इफ वी नोटिस yesterday we did mix and yield variances.
right? And the thing with mix and yield variances are, people are not very comfortable with finding them out, or, sometimes theory wise they look, simple, but जब हम एक्चुअली करने जाते हैं तो वो थोड़े से हमारे वीक पॉइंट्स आ जाते हैं, राइट? सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ पिकिंग अप माय लास्ट section C question as a variance question, and that too with a mix and an yield variance. So you get that comfort with this kind of questions and you don't struggle. As I said, मैं कितने भी क्वेश्चन कर लूं, एग्जाम तो आपको ही देनी है. सो आप जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस ये टॉपिक्स पे देखो would make you much more stronger in doing your final performance management paper. But take this revision as a lesson. Don't think कि आपको ये वाले ही टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे. मेरे हर क्वेश्चन जो मैंने पिकअप किया है आपके रिवीजन रिवॉल्यूशन के लिए, वो सारा एक इम्पॉर्टेंट या अनसंग टॉपिक पिकअप किया है, जो इतने सालों में पता चलता है कि स्टूडेंट्स को क्या डिफिकल्ट लगता है, राइट? अभी पढ़ाई करना है तो पढ़ाई तो आप कर लेते हो, राइट? टॉपिक्स सिलेबस आप कवर कर देते हो, लेकिन जब आपको एक आपको एक एग्जाम सिचुएशन में छोड़ दिया जाता है, which is when you give your own marks under a supervision or you give your final paper, right? So this is what I normally hear from students, that certain areas are their trouble areas, right? It does not have to do anything with the intensity, it does not have to do anything with the difficulty level of it, but sometimes certain things in your questions make you nervous, right? And that is what I have tried to do. I have picked up four questions which are of a typical topic or a typical nature which makes students nervous, so you get accustomed to it, right? But that completely does not mean कि आपको यही वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए. अगर आए तो वेरी गुड, नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि कराया हुआ है. लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आप इसको एक डिस्क्लेमर मार के चलिए. माय होल इंटेंशन इज टू मेक श्योर कि आपको सारे ही ट्रिकी टाइप्स के क्वेश्चंस और सारे ही ब्रेन ड्रेनर्स से, आई वुड जस्ट बी अकस्टमिंग यू विथ देम, to assure that you don't get into a, you don't spend a lot of time overthinking on questions. जब हम कल से 100 मार्क का क्वेश्चन करेंगे, which I'm going to do 2 papers with you tomorrow and day after, I will also show you how to manage time and how to run from one question to another if you're not comfortable with that topic, right? So with that, let's do section C का एक क्वेश्चन जो मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस पे है. नॉर्मल वाले वेरिएंस नॉर्मली स्टूडेंट्स को आते ही हैं, फिर भी हम मटेरियल है यहाँ पे तो मटेरियल का यूजेज देखेंगे, लेकिन फिर हम मिक्स और यील्ड पे जाएंगे, जो सिमिलर स्ट्रैटेजीज आप सेल्स के मिक्स वेरिएंसेस पे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है? So let's read this question, which is called Kappa Company, asked in 2018. Kappa Company produces omega, an animal feed made by mixing and heating three ingredients, alpha, beta and gamma. So product एक है जिसका नाम है omega, material तीन है, alpha, beta and gamma. The company uses a standard costing system to monitor its cost, and the material cost of for 100 kilograms of omega is as follows. So for 100 kilograms of the final product that is made, there are basically three products or three materials used, and this is the composition of the material that is used. So the input for alpha, beta, and gamma is 40 kilograms, 60 kilograms, and 20 kilograms respectively. The cost per kilogram is 2, 5, and $1. Cost for 100 kilograms of omega is obviously when you multiply your kilogram with the cost. So 40 into 2, 60 into 3, and 20 into 20 will give you the cost for 100 kilograms of production of omega, right?
The mixing and heating process is subject to a standard evaporation loss. That is where the logic comes that आप 120 kilograms of raw material डाल रहे हो and आपको 100 kilograms of output मिल रहा है, right? So जो भी process है उसमें एक standard loss है जो कंपनी anticipate कर रही है. Alpha, beta, and gamma are cultural products, and their quality and prices significantly vary from year to year. Standard prices are set at the average market price. Over the last 5 years, Kappa Company has a purchasing manager who is responsible for pricing the suppliers' contracts. सो ये जो तीनों रॉ मटेरियल्स है इनका प्राइस और क्वालिटी वेरिएट होता है बिकॉज दे आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड प्राइस जो इन्होंने सेट की है वो 5 साल से चेंज ही नहीं किया है सो दैट हैज बीन सेम फॉर पास्ट 5 years. Purchasing manager is responsible for the pricing and suppliers contract, but he is not dealing with the cost of the product, neither with the mix. The standard mix is set up by the finance department, and the last time this was done at the product launch, which was 5 years ago, which has also not changed at all. Last month, कंपनी ने 4,600 kilograms of omega बनाया, जिसके लिए ये इनका actual usage था. Input of alpha, beta, and gamma 2,200, 2,500, and 920 kilograms per respective material. Cost, as the question already says, keeps on varying. The actual cost is 1.8, 6, and $1 per kilogram, respectively. The total cost obviously is by multiplying that. So, 2,200 into 1.80, 2,500 into 6, and 920 into 1 gives you a total cost of $19,880. At the end of each month, the production manager receives a standard cost operating statement from Kappa's performance manager. The statement contains material price and usage variance, labor rate and efficiency variances, and overhead expenditure and efficiency variances for the previous month. No commentary on the variance is given, and the production manager receives no other feedback on the efficiency of the Omega process. What are you supposed to do? There are 3 4 marker questions which says calculate the material usage variance, calculate the total material mix variance, and calculate the total material yield variance. Apart from that, you discuss the problem with the current system of calculating and reporting variances for assessing the performance of the production manager. So here what you're doing is you are calculating some variances and then also discussing about the problems with the current calculation and reporting of variances, and which is of 8 mark. So आप notice करो यहाँ पे theory का भी almost 50% से कम लेकिन काफी relevance है. Let's do this. So पहले मैं A में first, which is usage variance find out करते हैं, right? So हम क्या लेंगे यहाँ पे? We will be taking our information that we know from the question, which is our product. What should have been used, what we did use, what is the difference, the standard cost per kg, and the variance, right, which comes in your dollars. What are the 3 products that the company has? हमको पता है alpha, beta, and gamma. What the company should have used, वो तो you have to find out. But what company did use,
क्वेश्चन में दिया हुआ है. So company has used all this. इनका actual quantity usage है, right? Company should have used how much? So कैसे find out करोगे आप? कंपनी कितना बनाने वाली है? 4600, right? जिसमें let me just put a bracket actually. 4600 kilograms के लिए ideally 40% आपका अल्फा यूज होता, right? So that means 40 by 100, and that gives you a value of 1840. I'll just show you what I did. 40 grams of alpha would be used to make 100 grams of omega, right? 40 grams of alpha, 40 kilograms of alpha is used to make 100 grams of omega. So मैंने 40 by 100 किया, and then I multiplied it with the actual production, which is 4600. The same technique I will be using for beta and gamma. 60 by 100 into 4600, 20 by 100, मतलब divide by 100 into 4600. So let's do that. Is equal to 60 by 100 into actual production, right? And यहाँ पे is equal to 20 by 100 into actual production, right? So कितना है हमारा total production? Let's figure out. Okay, so my total production usage should have been 5520, but I actually used more, right? So मेरा difference obviously एक adverse difference है अगर हम wholesome value में देखें तो, लेकिन हम individually देखेंगे, which is should use minus did use, and pick up the same formula throughout, right? Just going to use this formula and drag it along. माइनस ऑलवेज नेगेटिव नहीं बताता है. एज आई सेड, आउटफ्लो या इनफ्लो देखना चाहिए वेरिएंस में. तो अगर आपको 2200 आपने किलोग्राम्स ऑफ अल्फा यूज किया, आपको यूज कितना करना था? 1840. दैट मीन्स यू हैव ओवर यूज्ड इट. दैट मीन्स इट इज एन एडवर्स. माइनस एंड प्लस साइन से प्लीज आंसर मत निकालिएगा, वेरिएंस में मिस्टेक्स होंगे. आउटफ्लो और इनफ्लो वाला ही लॉजिक यूज करो वेरिएंस में, ठीक है? स्टैंडर्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, मैं वहां से सीधा ले लूंगी. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज दिस वैल्यू 2, 5 and 1. प्लीज डोंट यूज the actual cost because that is asked in your question. Then you just multiply, right? And just drag the formula throughout. You will get your actual variance. Here it would be 580 favorable, right? Usage variance, something that you would be comfortable, should use, did use. Outflow and inflow पे notice करो, plus and minus signs पे मत notice करना variance के लिए please. Let's go to the next one. Material mix variance. Right? So material mix variance हमने जो कल सीखा था वो वाला logic use करेंगे. Again I'm going to put my products. एग्जाम में इतना डिफिकल्ट होता नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए हमको. AQAM, sorry, SM, AQAM, difference, standard cost,
per kilogram and your variance, right? So तीन products है. मैं यहाँ से wait. I'm just gonna pick up these three products from here. जो जो मालूम है वो information डालते जाना चाहिए एग्जाम में. So वो आपको थोड़ा सा you get little comfortable कि भाई हाँ इतना तो आता ही है. Right? Now you also have this, which is your actual quantity at actual margin, right? That I have put up. Step 2 is taking the same value here, and now we put it into our proportions. So now, because this is according to the actual quantity and standard margin, we are going to put it in the proportion of 400 by 120. Okay, sorry, 40 by 120, because that is the usage of your product alpha, and then you multiply that with 5620, right? So 18.733. The second one was used 60, so 60 divided by 120 into this value, right? And the third one is 20 divided by 120 into again the same value. तीनों का टोटल एक बार टैली कर दीजिए, सेम आता है 5620. देन द आंसर इज करेक्ट. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम, विच इज एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड. सो आपको एक्सपेक्टेड था 1873 kilograms of usage of alpha. You ended up using 2200, which is more. That is why it is an adverse variance. Right, so what I'm going to do, I'm going to say equal to AQSM minus AQAM to get your value. Take this formula, drag it down, you'll get all the values correctly. To find out the variance now, difference लीजिए, cost से multiply करो, you'll get your value. Oops. Right? Drag the same thing down there. Right? And you get your answer. Here we'll just find a sum of. So don't go on the plus or the minus sign. Just notice that is this a cash inflow or outflow? This is an inflow, and hence this value becomes a favorable value, right? You need to double check on this value to assure कि आप 00 पे पहुंचते हो कि नहीं, which clearly is visible. 310 plus 1 plus 16.7 अगर मैं करूं तो वो 327 ही आता है. So at an average this answer is also correct. I am always requesting you कि जब भी मिक्स वेरिएंस आए तो डिफरेंस का टोटल एक बार टैली कर देना फॉर अ सेफर साइड. अगर वो 00 है, दैट इज वेयर योर AQSM, योर सेकंड कॉलम का वैल्यूज कैलकुलेशन इज करेक्ट, राइट? थर्ड वन अभी है अपना यील्ड वेरिएंस. राइट, प्रोडक्ट के साथ ही पूरा मैं यहाँ से कॉपी करूंगी. एग्जाम में ये यूज करना, टाइम वेस्ट नहीं होगा और आंसर भी अच्छा दिखेगा. Right, what else do I need? I need my standard quantity into standard margin, actual quantity into standard margin. मैंने actual quantity into standard margin already इधर find out किया है, so I can use that. But you know that value could not be dragged down. This value if I try to put here directly, no, क्या होता है, वो वैल्यू सीधा आएगा नहीं क्योंकि वो रेफरेंसिंग से जुड़ा हुआ है, तो वो वैल्यू शायद यहाँ नहीं आएगा. आई एम गोइंग टू टाइप दोज वैल्यूज हियर. 81873, just taking the absolute value, 2810 and 937.
राइट? यहाँ से ले लिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मार्जिन इज व्हाट SQSM should have been used. So वो सेम वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगी, ये भी मैंने फॉर्मूला ड्रिवन डाला था, तो ये भी शायद यहाँ पे नहीं आएगा. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दोज फिगर्स हियर. 1840, 2760 and 920. 1840, 2760, 920. Let's take a quick total of all of them. Right? And now the difference between what should have been and what is there, which is equal to this minus this, right? So gives me a negative value. A and yeah, this is a negative value actually. We just put is equal to this minus this, right? And then जैसे मैंने बताया था फॉर्मूला ड्रैग करो, आंसर आ जाएगा. Let's find out the variance difference into standard cost. Drag the formula. You will notice that the whole values are up here. Then what you have to do, you need to just add three of these. तीनों में अगर आप सिर्फ yield नोटिस करें तो तीनों में एक्सपेक्टेड से ज्यादा yield नहीं अचीव किया. मतलब yield अचीव हुआ है लेकिन when we talk about it, it is an adverse, right? Because actual quantity that has been utilized, that is more than what the standard or the budget was. That's why this is an outflow of cash. So ignoring the negative or the positive value plus or the minus value here, I'm going to write it as an adverse. Just look at this once more. I'm just going to quickly have some water, right? Sorry, right? So this is how you put your informations. Now, 8 marks का question है which says discuss the problems with the current system of calculating and reporting variance for assessing the performance of the production manager. In the question काफी बार ऐसा लिखा गया है जो प्रोडक्शन मैनेजर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर might be reviewed on certain things which he or she is not even being is into that, right? Like the mix, if you talk about the mix is something which the production management is not taking care of. The finance department did, and that too 5 years ago. Also the standard prices, the standard that has been priced for a product was also something that was done 5 years ago, right? So what does this show? This shows that the production manager cannot be held responsible for things that are not in his or her head, right? That is where we will be putting up information regarding that. 8 marks का क्वेश्चन है तो अच्छे 8 marks हमको लाने ही हैं, राइट? एंड 8 marks के लिए अच्छा इंफॉर्मेशन डालना है. ये वाला आंसर पूरा टाइप करें, आपको एक आइडिया आ जाएगा कैसे लिखना है, राइट? सो वी कैन सी that the raw material, just a second, yeah, the raw material price variance includes included in the report are probably outside
the production managers control and are more the responsibility of the purchasing manager. Okay, wait just a second. Let me just cut it up from here, put it in the next line. Right? Let's put more information. We can say that furthermore, the production manager has no participation in setting the standard mix. Already given in the question, right? And hence holding him or her accountable for variances they cannot control is demotivating. Again, this has gone little out of this line, so I'm just going to pick it up from here. Right? What else can we write? We can say there appears to be no use of planning variance here, isn't it? The price and quality of the three materials are volatile, and using 5 years old standards and mix will not give a true performance picture. Right? That is also mentioned, right? What else can we say? We can say that the standard mix has not changed since 5 years, nor is the quality and price. It can also lead the production manager to attempt control action based on variances which are calculated based on standards which are out of date. Right? And then we can just end it up. See, this is a 8 marks question. This is how you can form it. मैंने लाइंस को ब्रेक कर करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से दिखे. बाकी आपको तो एक फॉर्मेट, एक प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में ही इसको लिखना है. Right? And the last paragraph can be saying that as Kappa company does not currently give feedback, a true picture is lacking
as to the production manager's performance. There is also no follow up on the variance calculated, and we can say all in all, it appears to place much importance on the variances the production manager will not be motivated, right? I mentioned it already also. It will not be motivating him to control the cost and could become complacent, which could adversely impact. देखिए जब भी वेरिए जब जब वेरिएंसेस एडवर्स या फेवरेबल होते हैं एज आई सेड वो लॉन्ग टाइम के लिए एडवर्स या फेवरेबल रहे सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनी कंपनी because what happens is the managers who are involved in it, say here the production manager, right, they would not improvise themselves. जैसे कि ये सिचुएशन में क्या हुआ 5 साल से एक ही मिक्स पे काम चल रहा है एक ही प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस पे काम चल रहा है चांसेस है कि वो प्राइस कम हो गया हो and there would be a more margin which will reduce the cost. But since the price and the mix is not revised, the company is not able to cut down on that cost, right? There is also chance that the cost is very crunched, that is shown in the standard mix and for the standard cost. Obviously, because even that is not being revised for 5 years, that would show that the managers would be demotivated to achieve it. So under both circumstances, अगर एक ज़्यादा difference है standard और actual में या फिर और वो एडवर्स है या फेवरेबल है दोनों में ही प्रोडक्शन मैनेजर्स या जो भी मैनेजर्स ये हैंडल करते हैं वो डीमोटिवेट होंगे राइट सो the whole problem lies where the company has got 5 years where it has not moved it at all, which is a discomfort, which is where there is expected that the staff would be demotivated, right? So that's what we did today. We have done our two questions of section A and section B. Sorry, both of section C, not A and B, वो कल करेंगे, right? And we saw a question which had a graph, and we saw a question which was based on the mix variances, right? So मुझे जो भी important topics लगे या फिर मुझे जो भी students point of view से थोड़े से taboo लगे, I have covered those points or those kind of topics for my section C revision. Tomorrow and day after, we are going to do two full papers, which is a 3 hours paper, 100 marker paper, and which would be a mix of your section A, B, and C. I will be picking it up from the CBE platform only and doing it on the CBE platform only. Okay, so I hope you are revising with me and अपनी journey to pass your performance management is going on. So all the best for that. Keep carrying on with it, and I will see you tomorrow, same time. Thank you and take care. And don't forget studying.